from slum to glory. I had a dream, a fantasy. Lofty dreams of a humble mother. असला मेडल ओलंपिक का मुझे चाहिए. She said that Nisar Ahmad is not just my son, he is India's son. Spirit of nationalism. सबका बेटा इसे आगे बढ़े, मेरे भारत का नाम रोशन करे. मेरा तो नहीं है, अब तो पूरा भारत का बच्चा हो गया. Dedicating his son to the nation. क्योंकि हमारा बेटा तो रहा नहीं, ये पूरी भारत का बेटा हो गया. The 16-year-old wonder boy Nisar Ahmad's dream. मैं सपना भी है कि मैं पहला इंडियन बनूं जो ओलंपिक्स में 100 मीटर में अपने इंडिया को मेडल दे सकूं. A role model for the youth. The whole media across India was calling him Junior Usain Bolt. Selfless service of a coach. जूस वगैरह बढ़वाया, दूध लगवा रखा था, फ्रूट वगैरह देने शुरू करे. जो भी इसकी डाइट थी मैं देता था इसको, अभी भी दे रहा हूँ. Sports knows no boundaries. There is nothing better than sport to unify the world. I had a dream, a fantasy. We all are in some way or the other struggling hard in our lives to make both ends meet. But the couple, Nanku and Shafiqunnisa, are running a different race in their lives. Not a race for their survival, but to keep their son's dream alive. The 16-year-old wonder boy Nisar Ahmad's proud parents are yet to witness their son's heroics on the track. But when it comes to the number of medals that Nisar has won, Nanku and Shafiqunnisa's count is absolutely perfect. The clinking sound of medals brought a smile on the parents' face was a welcome sight when we reached their new house in Ashok Vihar in Delhi. After a warm greeting, we asked Nisar, निसार, इतने ढेर सारे मेडल्स कितने सालों में जीते होंगे आपने? 4 साल. अच्छा, ये कौन सा मेडल है? ये स्कूल नेशनल गेम्स का है जो भोपाल में हुआ था अभी. मैंने उसमें मीट रिकॉर्ड बनाया था 100 मीटर में, स्कूल नेशनल में. The young prodigy and his proud parents knew that this was just the first step they had all taken, with many more still to be climbed. Shafiqunnisa knows this fact very well. She visualizes her dream. अल्लाह से यही ख्वाहिश है, तमन्ना है, पूरा मेडल सनी मेरा घर भर दे, पर असला मेडल ओलंपिक का मुझे चाहिए. हमारा बच्चा जब इतना मेहनत किया है तो उसका जो है फल तो मिलना चाहिए. For Nanku and Shafiqunnisa, who left their village to settle in Delhi's Azadpur slum, the transformation wasn't that easy. Nanku recalls. जिला गोंडा यूपी तरफगंज तेज कुरमिनपुरवा के हम रहने वाले हैं. तो दिल्ली आए मेरे को कम से कम 40 साल हो गए हैं. ना खेती है ना घर है, ढंग से कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें दिल्ली भागना पड़ा. वहाँ जब रहते तो मजदूरी करा करते थे, कमाते थे. शुरू में 1 रुपया मिला, फिर 1.5 करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 5 करा. तो उससे फिर कुछ नहीं बना हमारा. तो हमने सोचा आप दिल्ली चले चलो, वहीं कुछ करो, रिक्शा चलाओ नहीं और मजदूरी करो, वहाँ तो कुछ इससे ज़्यादा ही कुछ मिलेगा. They left their village with the hope of making it big in Delhi. Nanku reminisces. सपना लेके आया था दिल्ली जी. But the struggle wasn't over yet. Nanku tells us. दिल्ली आए मेरे को कम से कम 40 साल हो गए हैं. हम अभी भी रिक्शा चला रहे हैं. मैं सामान ढोता हूँ फैक्ट्रियों का रिक्शे पे. तो रिक्शा इसलिए चला रहे हैं कि हमने टेम्पू लेने के लिए सोचा था. तो मैंने सोचा था टेम्पू लेके उस पर ढोएंगे, थोड़ी ताकत कम लगेगा और कमाई भी बढ़ जाएगी. Nanku and Shafiqunnisa have 3 children, 2 daughters and a son. The elder daughter, Razia, has got married, while the younger one, Rukhsar, is yet to be married, whose fate depends on her brother, Nisar's career. Nanku tells us emphatically. जो कुछ कमाया हम मियाँ बीवी ने मिलके सब इस बच्चों में लगा दिया, इसको बनाने के चक्कर में. बाकी एक लड़की की शादी हमने कर दी थी किसी तरह. एक लड़की भी बची हुई है इसके वजह से कि ये कुछ बन जाए तो लड़की की शादी करूँ, नहीं तो लड़की की शादी कर दूंगा तो पैसे नहीं रह जाएंगे, फिर इसको बनाऊंगा कैसे. इसलिए उसकी शादी रोक दी अभी. It wasn't just Nanku
who was suffering from sleepless nights, but also his ailing wife, who was fighting against all odds to make Nisar's dream a reality. For 16 years, Shafiqunnisa was working as a maid in various houses, and she was advised by the doctor against working. But Shafiqunnisa is a woman of strong determination and willpower. She told us with great composure, मैं कोठी में काम करती थी, झाड़ू बर्तन पोछा कपड़ा ये करती। फिर मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप कोठी में काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि घुटना घिस रहा है तुम्हारा। डॉक्टर से बोला मैंने, डॉक्टर मेरे लड़का से नहीं बताना, मैं काम नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे लड़का कुछ बनाना है। Nisar wasn't sure about his talent in racing. It was Surendra Singh, the physical education teacher in Government Boys Senior Secondary School, Ashok Vihar, Delhi, where Nisar studied, who first spotted the spark in this sprinter. इसके अंदर तो नेचुरल स्पीड थी, लड़के के अंदर स्पीड बहुत ही नेचुरली, जैसे इसके स्टेप हैं घोड़े की तरह, जैसे स्टेप लंबे स्टेप पड़ते हैं घोड़ा के। मैंने इसकी खुद ही स्ट्रेंथ देखी, स्पीड है लड़के अंदर, ये लड़का कुछ गेम कर सकता है इसके अंदर हुनर गेम का। Nisar talks about his initial journey with pride. मैं क्लास में बैठा हुआ था, मुझे एथलेटिक्स का कुछ आइडिया भी नहीं था कि 100 मीटर 200 मीटर होता क्या है। तो मुझे कहा कि पार्टिसिपेट करना है बेटा, छत्रसाल स्टेडियम में खेलने चलना है। तो फिर मैंने हाथ ऊपर करा। मैं पहले से थोड़ा सा अच्छा भाग लेता था, तो उन्होंने कहा सिर्फ भागना है बस। उन्होंने ये नहीं कहा कि 100 मीटर भागना है, क्योंकि उसके बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने नाम लिखवाया, फिर वो मुझे यहाँ जोनल में लेके आए और मेरे स्कूल के काफ़ी बच्चे आए जो सारे हार गए, बट एक अकेला मैं ही था जिसका मेडल आया था, गोल्ड। Surendra Singh is a cog in the wheel of Nisar's journey. There was no money in Nisar's pocket to have a proper athlete's diet. It was Surendra Singh who gave him money so that he could have nutrition needed for a sportsman. He told us, मेरे पास फिर यहाँ आया, आके बोला सर क्या करूँ, मेरे को चक्कर आते हैं। मैंने इसको समझाया बेटा कुछ नहीं है, तो अपनी डाइट बढ़ा। डाइट में क्या क्या था? मैंने इसकी डाइट जूस वगैरह बढ़वाया, वहाँ पे मैंने इसका दूध लगवा रखा था। फिर मैंने इसको फ्रूट वगैरह देने शुरू करे, जो भी इसकी डाइट थी मैं देता था इसको, अभी भी दे रहा हूँ। Besides providing for his diet, the physical education teacher helped Nisar in many ways. Surendra Singh shares with us. फिर ये 13-14 में अच्छी प्रैक्टिस करने लग गया। उसके बाद को बोला सर बोला मेरे पास स्पाइक्स नहीं है, और इसको स्पाइक्स दिलवाए, मैंने शूज दिलवाए। No wonder Shafiqunnisa wants us to talk about him in this program, as any story on Nisar is incomplete without mentioning the contribution of his school coach. Shafiqunnisa recounts. लड़का के लिए दूध बंधा दिया तो भैंस से आधा किलो दूध रोज मैं लाती थी, पैसे वो देते थे। वो एक माँ बाप की तरह किया है, मेरे बच्चे को इतना दिन दूध पिलाया है। अपने घर से घी लेके आते थे, वो मेरे लिए भगवान से बढ़ के हैं। उनका आप जरूर लिखना, चाहे मुझे भूल जाना एक बार। Pushed to the brink by circumstances, Nisar's mother asked him to look for a job and start earning, but his response to this stunned her. Shafiqunnisa says, जो कमाती थी घर में भी खर्चा होता था, तो फिर लड़का से कहा कि अब मेरे बस का नहीं है बेटा, अब तू कहीं काम करो। तो लड़का ने बोला मम्मी मैं आपको 10-12 हज़ार रुपया ला के दे दूँगा, तो इसमें सिर्फ आप ही जानोगे कि निसार अहमद हैं। मैं वो काम करना चाहता हूँ कि दुनिया वाले तुम्हारे निसार अहमद को जाने, पूरी मेरी भारत जाने की निसार अहमद हैं। मैं भूखन मर जाऊँगा पर रेस नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुछ भी न दो, अब जो देती हो खाने को ऐसे ही दो मुझे। In 2016, the 61st National School Athletics Championship held in Kerala, Nisar was adjudged the best athlete. Surendra Singh recalls this wonderfully successful trip. दिसंबर में नेशनल थी 15-16 में केरला में कोचिकोट में, इसके साथ गया फिर मैं वहाँ पे। तो नेशनल में इसकी पहले दिन 400 मीटर नेशनल में इसको इंजरी आ गई। बोले सर मैं तो दौड़ नहीं सकूंगा, मेरा इंजरी है बहुत ज्यादा। मैं साथ में गया था इसके साथ, अपना खुद का खर्चा पे गया था मैं साथ में। इसको वहाँ से मैं टैक्सी करके लेके ही जाता था इसको मैं। अगला दिन 200 मीटर में ये बिल्कुल मना कर गया, सर मैं गेम नहीं करूंगा। मैंने अपने पास रख के इसकी मैंने अपने बर्फ वगैरह से सिकाई करके इसकी मालिश करके अगला दिन मैंने इसकी 200 मीटर कराई। 200 मीटर में सुबह हिट हुई और
सेमीफाइनल हुई और शाम का टाइम इसका फाइनल था, उसमें ये सेकंड आया इंजरी होने के बावजूद। मैडम आपने मालिश करी और आपने इसकी देखभाल करी? सब अपने पास रख के करे, मैंने अपने पर्सनल रूम पे रखे वहाँ पे। फिर मैं इसका 100 मीटर था, 100 मीटर में इसको सुबह सुबह हीट दी थी, हीट में फर्स्ट आया ये। फिर इसका सेमीफाइनल में फर्स्ट आया ये। फाइनल में इस केरला में 100 मीटर में गोल्ड आया, नेशनल रिकॉर्ड बना के इंडिया का, और रिले में गोल्ड आया। As a mentor and coach, Surendra Singh knew what Nisar needed. He gave him money and motivation, and later pushed him further in his journey of betterment and improvement. Without wasting any time, he referred Nisar to Sunita Rai, who was also a government coach at the Chhatrasal Stadium. Nisar says this change helped him to reinvent himself. मैं 4 साल से एथलेटिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरी कोच सुनीता राय मैडम है, मैम गवर्नमेंट कोच हैं यहाँ 36 साल में, तो इनके पास शिफ्ट कर दिया। जब से मेरे अच्छा होते गया, मेरा टाइमिंग्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, ठीक होते गया। मैं पहले मीट रिकॉर्ड बनाया, पहले जोनल रिकॉर्ड बनाया, फिर दिल्ली स्टेट रिकॉर्ड बनाया, फिर इंटर जोन रिकॉर्ड बनाया, फिर मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद मैम के पास ही रही। Coach Sunita Rai, who is playing a hugely important role in Nisar's life and success, talks at length. खासकर जैसे निसार का था, क्योंकि ये ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आया था कि यहाँ रेलवे ट्रैक के पास बड़ा बाग में एक झुग्गी, वो भी उसके अंदर सिर्फ एक कमरा, वहीं रहना है, खाना है, सोना है, और प्रैक्टिस करके जाता था। तो कैसे रेस्ट करे वहाँ पे, वो तो मुझे उस टाइम तक तो नहीं पता था जब स्टार्टिंग में ये आया। तो जब ये यहाँ प्रैक्टिस जब करता था तो बहुत निराश सा लगता था कि मैं इससे पूछती थी क्या बात है, पहले तो बताता नहीं था। फिर धीरे धीरे इसने शेयर करना शुरू किया कि ऐसे मैडम मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं कंटिन्यू एथलेटिक्स नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स बीमार भी रहते हैं। तो फिर मैंने इसको काफ़ी मोटिवेट किया और थोड़ा सपोर्ट किया इसको फाइनेंशियली, जिससे थोड़ा आगे इसको मोटिवेशन मिले और ये करे, क्योंकि इसके अंदर टैलेंट तो बहुत था। मैम ने कई कबार पैसे भी दिए अपनी तरफ से, और मैम भी कितना करती, इनकी भी फैमिली थी, पर अपनी तरफ से काफ़ी करती थी मैम, तो इतना इनफ था। मैं इस एथलेटिक्स छोड़ दूंगा, तो मैम ने कहा नहीं छोड़ना, अब यहाँ तक आ गया, काफ़ी मोटिवेट किया। मैं तो 2-3 बार सच में कहा कि मैं छोड़ दूंगा, मेरे बस की नहीं, क्योंकि शूज़ इतने महंगे आते हैं, स्पाइक्स इतने महंगे आते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स इतने महंगे आते हैं, तो फिर मैं नहीं करूँगा। इंडिया चैम्पियन इस समय बना है, तो ऐसे ही इसको मोटिवेट किया और इसने फिर कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। निसार में विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो ये कंटिन्यू कर गया। Soon came the dream moment in Nisar's life, which every sprinter dreams of, meeting the king of the business, Usain Bolt. It was a dream trip to Jamaica for Nisar. He was training under the popular coach Glenn Mills and also got a chance to meet the 8 times Olympic champion Usain Bolt and John Blake, with whom he had a small stint. Nisar was among the 14 promising athletes who were selected to undergo a month-long training camp at the world-famous Racers Club, home to Bolt and his coach Mills. It was a great learning experience for Nisar. जब हम हार जाते तो हमें टेंशन हो जाती है, बट वहाँ के प्लेयरों में ऐसा कुछ नहीं कि अगर वो हारते तो वो बस सीधा दूसरी इवेंट की तैयारी पे लग जाते हैं, वो टेंशन नहीं लेते हैं। तो उनके कोच भी उस टाइम उन्हें साथ देते हैं, मोटिवेट करते हैं अच्छे से, और सब कुछ फोकस पे और हार्ड वर्क पे और डाइट पे और पूरा प्रॉपर रेस्ट पे है। At such a young age, Nisar himself is becoming a role model for fellow aspirants. We caught up with his friends in the stadium. मैं प्रिंस चौधरी, मैं निसार को देख के आया हूँ। निसार मतलब अच्छी परफॉर्मेंस करता है, इसको फॉलो करता हूँ, इसको देखता हूँ, इससे काफ़ी कुछ सीखा मैंने। प्रैक्टिस तो पहले से करता था, लेकिन देख के अंदर से आती है हम भी कर सकते हैं। निसार ने काफ़ी किया, तो फिर मुझे भी लगा कि मैं भी, जब वो इतना कुछ कर सकता है तो हम भी तो इंसान है, मेहनत करने में क्या जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा निसार यहाँ तक का पहुँचा और काफ़ी अच्छे लेवल पे हमारे देश का भी नाम रोशन हो रहा है। We were surprised to learn that young Prince and Nisar's idol in sprinting is America's Justin Gatlin. तो आपका रोल मॉडल कौन है? गैटलिन, जस्टिन गैटलिन। मेरा भी यार सबसे फास्टेस्ट स्टार्ट है उनका, सबसे तगड़ा स्टार्ट है वर्ल्ड का, और टेक्निक भी बहुत अच्छी है उसकी। It was not only the battles on the track which Nisar had to win. On the home front, he found another battle awaiting him. He contracted the disease chikungunya, where he lost almost a year, missing many tournaments, and even the hope of making a comeback was looking far from reality. Nisar recounts
how challenging the period was. जब कठिनाई के दौर से गुजर रहे थे तब कैसा लगता था कि मैं खेल पाऊंगा या खेल छोड़ दूंगा? हाँ मैम, मेरे को एक टाइम 1 साल तक मैं चिकनगुनिया भी था, मेरी हैमस्ट्रिंग दोनों पैरों की मतलब टूट सी गई थी, तो काफी टाइम हो गया, 1 साल पूरा मैं बेड पे था। हाँ। तो सिर्फ मैं बस तो अपने दोस्तों के लिए तालियां बजा सकता था उन्हें देखकर कि वो जीत रहे, बट रोता था हमेशा और मैं खुद खेलने की काफी कोशिश करता था, बट इंजरी और चिकनगुनिया की वजह से इतना बॉडी वीकनेस हो गई थी कि कोई इवेंट या किसी भी खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया 1 साल पूरा। उसके बाद मैं जैसे ही ठीक हुआ और सब कुछ अच्छा होता चला गया। आसमां भी हारता है, जमीन पे वक्त गुजारता है, फिर से उन ऊंचाइयों की चाह में। Even the neighbors and acquaintances demoralized the sprinter and his parents. Shafiqunnisa laments. इसके साथी लोग शुरू में दौड़ता हंसी उड़ाते थे, तुम बुढ़ी होके जो है कोठी में काम करती हो, रिक्शा चलाते हैं, इसको काम लगवा दो और 4 पैसा कमा के लाए, और जो है इससे कुछ नहीं होता है, दौड़ने से कोई कुछ कभी भला हुआ है? कुछ नहीं होता है। In 2017, Ahmad had 300-meter runs under 11 seconds. In November, at the 33rd National Junior Athletics Championship in Vijayawada, he broke the under-16 national record for 100 meters with a timing of 10.73 seconds. The young sprinter was doing his bit on the track and off the track as well. सबकी नजरें उसी रेस ट्रैक पर। He wanted overall personality development and also financial support. His research led him to Muhammad Munawwar Zama, a personality development professional. But convincing Zama wasn't that easy. Muhammad Munawwar Zama recalls. I could not believe that how a boy from the deadly slums of Delhi could do wonders in athletics. Especially he mentioned that he could run 100 meters inside 11 seconds. I could not believe his words, but still I was not certain about his achievements, and I did ask him if I could meet him in person and see him. So he told me that in the very same month there was a junior national athletics meet in Vijayawada. I traveled there and I stayed with him for about 3 days because I wanted to help him, but I wanted to assure myself that he had the spark I wanted to see. So I went to Vijayawada for about 3 days, and I was so surprised to, see him do wonders there. In 100 meters, he got the gold medal. In 200 meters, he got the gold medal. And in fact, in 100 meters, he created the national record there in the junior national athletics meet. He ran 100 meters in 10.73 seconds. That was a national record. No junior athlete under 17. So I witnessed amazing spark and tremendous potential in that boy. And I decided then that I should definitely help this boy. And I was very sure that if he was supported and sponsored, he would do wonders in athletics. Nisar is not only a great sprinter, but more than that, he is a very inspiring human being. At a tender age, he has imbibed human values which can inspire and motivate fellow human beings at any age. It is an emotional Shafiqunnisa who talks about her son's good deeds at length. हमारा बच्चा तो इतना अच्छा है, अभी एक अंकल जी खत्म हो गए हैं, उनका इतना सेवा करता था, पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, भर्ती कराया, दवाई कराया, राशन पानी 2 साल से भरा के देता था, मरते समय इतना दुआ दे के गए हैं, इतना दुआ दम निकलता था, फिर भी निसार अहमद का नाम लेते थे। The sprinter is a compassionate human being. After winning, he always shares his happiness. Glowingly, his mother tells us. हजरत निजामुद्दीन जाता है, जिससे गरीब बच्चे हैं, बहुत से गरीब बैठे रहते हैं भूखा प्यासा, उनको खाना वाना खिला के आता है। हम सब का खुदा तू है, अल्लाह बड़ा तू है। हम सब का खुदा तू है, अल्लाह बड़ा तू है। हम सब का खुदा तू है, अल्लाह बड़ा तू है। Going to Jamaica was a learning curve for Nisar. He learnt a lot of things from the people and sports persons from a different land, speaking a different language and belonging to a different culture. Senior sports journalist Vijay Lokapalli believes that sports unites everyone
and is a great teacher. Sports is one platform which brings people together. On a sports field, you get players are coming from all over India. There are times when you will not even be able to understand each other, where you speak different language. But the idea is to play together. It's a bonding which cannot be forged overnight. It comes from the fact that you are playing as a team, you want to do well, you want the team to do well, and it teaches you to accept defeat. And here also you get to know different cultures, because somebody from south will teach you different ways of approaching life. There is cultural difference, yes, but when you come together you begin to respect each other and begin to like each other's culture, language. You learn language, so it helps. Essentially it teaches you to be together because you play as a unit to beat the other unit, which is also a very cohesive and combined combination. In sports, the boundaries are not defined. It provides a platform to those with physical limitations to compete and earn a place for themselves in a society. Giving wings to their spirits is what sports does. Senior sports journalist Vijay Lokapalli tells us blind cricket has also become very popular. Obviously, it should not be compared. India has done exceptionally well in this field. It has different set of rules, and the ball which is used creates a sound because they can't see, so they go by the sound of the ball. So it's very different to watch if you watch blind cricket, and one should not compare, but they also have a place in society, and they are trying to come up and be like any other normal human being. So that is what I most appreciate about them, that they want to compete. They want to tell the world that we are not handicapped, we are able-bodied, we are just like you. So that spirit is something amazing. We have Deepa Malik. Her story is very different. She overcame such challenges, and look at where she is today, the way she has inspired generation to believe in themselves. So handicap is not an issue anymore. You can use it as a strength to send a very positive message on the sports field. Paralympics is one field which is giving a platform. Yes. To physically challenged persons. Absolutely, and it is very popular. Because of Paralympics, there is acceptance in general society that yes, they need to be looked after specially, so due to certain reasons, but they have an equal platform to excel and emerge as sporting heroes. Sports has a huge potential to empower women and girls. Vijay Lokapalli further adds. Parents want their daughters to go and play. I mean, normally today they're allowing their girls to go and stay in camps, they're traveling. So it is a good sign, and they have done so well. Look at Sania Mirza, Saina Nehwal, PV Sindhu, Mary Kom, Deepa Karmakar. They have done wonders for India in the sports field. So it is a good thing that more and more we are encouraging women to take to sports, and a lot of credit to it I would give to these positive stories in the media. Sports teaches competitiveness and instills the urge for success. Moreover, it plays a quintessential role of a unifier, which has the power to unite competing countries. Veteran sports writer and commentator G. Rajaraman throws light on this. I think sport is one of the best unifiers in the world. Music must be the other one, but music sometimes needs language, and sports knows no language. Therefore, it must be one of the best unifiers. Muhammad Munawar Zama is of the opinion. Well, I would like to say that when any game is played with a true spirit, has the charm to attract people. It has the charm to connect not only to nations, but also connect to continents, and can in fact unite the whole world. And then let me also say, if there were no sports and games in the world, many nations would have been collapsed and finished from the face of the soil, with wars between the nations for tiny reasons. And it is the sports that I would say that is keeping the nations united. And as long as sports and games are played and promoted, doors of reconciliation and the doors of friendship are always open. Sports enhances a sportsperson's self-confidence and self-esteem, instilling in him the spirit of a never-say-die attitude, pushing him to conquer and overcome all kinds of challenges. G. Rajaraman
shares his invaluable insight. I think what has happened is that Indians have started playing a lot more with overseas players. The fear factor has gone out. There was a time when Indians used to be in complete awe of overseas players. Now that fear is gone and they see all these players as equal. Sport has the power to instill belief in the minds of the players and in the minds of all Indians that they are no less than anybody else. In fact, they are equal to the best in the world. Nisar Ahmad, the young sprinter, has successfully reached a milestone by participating in the international sports event in Bangkok and securing for himself a berth in the 200 meters race in the Youth Olympics to be held in October 2018 in Argentina. However, Muhammad Munawar Zama has a concern. I used to motivate him. He needs a lot because, he is not so good at studies because he spent all his life in the deadly slums. He is not open to the world. He hasn't got any kind of exposure at all. I just need to spend time with him. Then I would impart the communication skills as well. So we are trying to motivate him a lot and teaching every now and then on telephone. But he needs a lot of grooming. He needs a lot of training apart from the training on the ground. He needs the moral development training, personality development. All eyes are on young Nisar. G. Raja Raman opines. I wish he trains very hard, keeps a very straight route and practices to become the best in the country. It is sad that despite showing talent at the age of 17 and 18, he's not moved on to the higher level. Hopefully he will train well, get the right advice and start focusing a lot more to be able to challenge the best in the country. Young Nisar was surrounded by the media and reporters who were vying with each other for an exclusive bite from the champion runner. But the young, focused and determined sprinter had only this to say. छोटी मोटी चीज से भी खुश नहीं होना मुझे, ये तो एक अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है मेरा. छोटी मोटी जीतों से खुश नहीं होते हैं. मतलब मैम ये अच्छा लगता है कि सपोर्ट मिल जाता है, मोटिवेट होता रहता हूँ कि हाँ मैं जीत रहा हूँ. लेकिन आपकी नजर बड़े खेलों पर है. हाँ, मेरा टारगेट अभी बड़ा इवेंट है, तो पहले छोटे से ही बड़े इवेंट पे पहुँचते तो अब पता ही होगा, बट अभी सारा फोकस वही है मेरा इंटरनेशनल गेम्स में इंशाल्लाह. An emotional mother shares her feeling. मेरी मजबूरी देख के इसकी आंखों में आंसू आ जाता था. फिर ये मेरे से कहता था, कोई बात नहीं मम्मी, इंशाल्लाह आज तुम खिला रही हो तो इसका मैं कभी सूद समेत आपको लौटा दूंगा, जो अल्लाह चाह लेंगे. The ultimate goal for Nisar. मेरा सपना भी है कि मैं पहला इंडियन बनूं जो ओलंपिक्स में 100 मीटर में अपने इंडिया को मेडल दे सकूं. Shafiqunisa declares. मेरा तो नहीं है, अब तो पूरा भारत का बच्चा हो गया. A mother's spirit of nationalism. ऐसा लड़का भगवान सबको दें, सबका बेटा इसे आगे बढ़े और दुनिया में नाम रोशन करे, मेरे भारत का नाम रोशन करे. Muhammad Munawar Zama believes. This is the very beginning, I would say. He has just got the gold medals in national games. But if he does wonders in the international events, we would definitely form a big team and we would help such talented individuals, such deserving individuals. This is just the beginning of a wonderful and remarkable journey for Nisar Ahmad, sprinting from slum to glory. कुछ करिए नस नस मेरी खोले.